चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं When an individual is said to be resident and ordinarily resident in India। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए कंप्लीट हो गई, ये पता चल गया कि जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है। अब हम लोग को निकालना है कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नहीं है। कैसे? द लॉ हैज़ नॉट prescribe the conditions of ordinarily resident in India. Section 6(6) states that an individual shall be not ordinarily resident in India if he satisfies any one of the following two conditions. इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन सेक्शन 6(6) बोलता है स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल शैल बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो इंडिविजुअल फुलफिल कर देता है तब उसे हम नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहेंगे। तो मतलब अगर वो दोनों कंडीशन ही अगर फुलफिल नहीं करता है तब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। नंबर 1, he has been a non-resident in India in 9 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। जो प्रीवियस ईयर है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर है उससे उसको छोड़ करके उससे पहले का अगर हम 10 प्रीवियस ईयर्स लें तो 10 में से 9 बार वो नॉन रेसिडेंट रहा है। ही हैज़ बीन ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन 9 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। ठीक है, या और he has been in India for a period of 729 days or less in 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। वो प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसके पहले के 7 प्रीवियस ईयर्स में वो 729 डेज से कम, he has been in India for a period of 729 days और less, उससे कम ही वो रहा है। पहला तो हो गया कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ कर उससे पहले का अगर हम लोग 10 प्रीवियस ईयर्स लें वो 10 में से 9 बार वो नॉन रेसिडेंट रहा है, या वो असेसमेंट ईयर का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उससे पहले का जो 7 प्रीवियस ईयर्स है उसमें वो 729 डेज या उससे कम रहा है। Deriving from the above, an individual who is resident in India shall be resident and ordinarily resident in India if he satisfies both the following conditions। ऊपर की कंडीशंस को देख करके हम यह समझ सकते हैं कि हम कब एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। तब बोलेंगे जब वो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करे। क्या क्या? ही हैज़ बीन ए रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो पहले के 10 प्रीवियस ईयर्स है उसमें कम से कम 2 साल वो रेसिडेंट रहा हो। This means that he must have satisfied any one of the conditions with exceptions given above for being a resident for at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो हो गया ये, एंड दूसरा कंडीशन किया है he has been in India for 730 days or more during 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। 730 दिन या उससे ज़्यादा वो है, ये दोनों कंडीशन उसको फुलफिल करना होगा। अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है
तो हम उसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोल सकेंगे। When an individual is said to be resident but not ordinarily resident in India, section 66A, an individual who is resident in India is said to be not ordinarily resident in India if he does not satisfy any or both of the conditions mentioned in clause A and B above. दोनों कंडीशंस या तो फुलफिल ना करे या फिर दोनों में से कोई भी एक कंडीशंस अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो हम उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोलेंगे। When an individual is said to be non-resident in India, section 230। अब नॉन रेसिडेंट कब होगा? तो रेसिडेंट के लिए तो हम लोग समझ गए थे क्या था रेसिडेंट का। वापस से अगर हम लोग याद करें तो क्या था कि वो रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम 182 डेज भारत में रहे, या दूसरा था 60 डेज रहे, ठीक है ना। वो 60 डेज तो पिछले साल रहे और 365 दिन 365 डेज कम से कम वो पिछले साल को छोड़ करके उससे पहले के तो 4 साल है उसमें वो रहे, ठीक है। फोर प्रीवियस है 4 साल में वो रहे, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो रेसिडेंट हो जाएगा और फिर हम लोग को निकालना होगा कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। अच्छा, सेक्शन 230, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ए नॉन रेसिडेंट इफ ही इज नॉट ए रेसिडेंट इन इंडिया, दैट इज none of the conditions with exception mentioned in para is satisfied. The conditions for determining the residential status may be summarized as under। ये समराइज में मैं बताया है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। Conditions for determining whether an individual is resident or not। Conditions of category A for individuals not covered under columns 2 and 3, column 2, column 3, for an Indian citizen who lives in India during the relevant previous year for the purpose of employment or as a member of the crew of an Indian ship, for an Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India comes to visit India during the relevant previous year। Number A, must be in India for at least 182 days during the relevant previous year, or must be in India for at least 60 days during the relevant previous year and 365 days during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। ये वाला कॉलम का कंडीशन must be in India for at least 182 days during the relevant previous year। सेकंड कंडीशन नहीं है। The condition number 2 of column number 1 will be of no significance because in view of the exceptions the period of stay in India has been raised to 182 days। Number 3 column must be in India for at least 182 days during the relevant previous year। This condition number 2 of column 1 will be of no significance because in view of the exception the period of stay in India has been raised to 182 days। Conditions to be satisfied for being an ordinary resident in India। Conditions of category B should be resident in India for at least 2 out of 10 previous years preceding the relevant previous year and should be in India for at least 730 days during 7 years preceding the relevant previous year। If any or both of the above conditions of para B are not satisfied, he shall be said to be not ordinarily a resident in India। For the purpose of determining the residential status for preceding 10 years,
it must be noted that in the case of a citizen of India who leaves India during the relevant previous year for purpose of employment outside India, the period of 60 days stay in India was raised to 182 days from assessment year 1983-84 onwards. In the case of citizen of India who leaves India as a member of the crew of an Indian ship, the period of 60 days stay in India for that previous year was raised to 182 days from assessment year 1990-91 onwards. In case of an Indian citizen who visits India during the relevant previous year, the period was raised from 60 days as under. तो अभी है 182 days. For persons of Indian origin who visit India during the relevant previous year, the period of 60 days was raised as under 182 days. Therefore, the above extended period may be kept in mind in determining the residential status of the last 10 years. ठीक है, तो मेनली जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बता दिया. इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा, आप इनकम टैक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसका मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ. अच्छा, a citizen of USA has been staying in India since 1984. ये illustration है, समझते हैं. He leaves India on 16/7/2003 on a visit to USA and returns on 4 January 2004. Determine his residential status for the previous year 2003-04. Step 1. Find out if he is a resident. पहला तो resident है कि नहीं देखते हैं. For this, examine if he satisfies first condition, stay in India for at least 182 days. His stay in India during the previous year 1/4/2003 to 31/3/2004 is as under. अप्रैल में वो 30 दिन के लिए था, मई में वो 31 दिन के लिए था, जून में वो 30 दिन के लिए था, जुलाई में वो 16 दिन के लिए था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो बाहर था, जनवरी में वो 28 दिन के लिए था, फरवरी में वो 29 दिन के लिए था, फरवरी वो लीप ईयर होगा इसलिए 29 दिन है, मार्च में वो 31 दिन के लिए था. Thus, his total stay in India during the previous year is of 195 days. As he is in India for more than 182 days during the relevant previous year, he satisfies the first condition and is therefore a resident. इसलिए वो एक resident है. In this case, we need not examine the second condition as the first condition is already satisfied. क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, इसलिए हम लोगों को सेकंड कंडीशंस निकालना ज़रूरी नहीं है. सेकंड कंडीशंस क्या था? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उनके पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम 365 दिन उसको भारत में रहना होगा. अच्छा, in this case we did not examine the second condition. Time and hour of leaving and arrival is relevant. However, in this case it is not given. Here, number of hours are otherwise not important as he was in India for more than 182 days. It would have been important if it was a marginal case of 182 days. ठीक है. Step 2. अब हम लोग निकालेंगे कि वो ordinary resident है या नहीं. Find out if he is ordinary resident or not. A. Examine first condition, resident for at least 2 out of 10 previous years prior to relevant previous year. ठीक है. Ten previous years prior to the relevant previous year are 1993-94 to 2002. ठीक है. During these years, he has always been in India. He therefore satisfies the first condition for being a resident. 182 days stay in India during the relevant previous year. ठीक है, पहला condition fulfill हो गया. Now examine the second condition. 730 days stay in India during 7 previous years.
prior to the relevant previous year. 7 years prior to previous year means the period of 1496 to 31/3/2003. During this period, he should be in India for at least 730 days. As he has been in India during the entire period, this condition is also satisfied. As both the conditions have been satisfied, he is a resident and ordinary resident in India. हो गया कहानी. दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं. Indian citizen and businessman Shri Raj Gopal, who resides in Jaipur, went to Germany for employment purposes on 15 August 2003 and came back to India on 10/11/2004. वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया. तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस में सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होगा 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर. ये हम लोग को ध्यान में रखना. ही हैज़ नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट. डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ श्री राज गोपाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2004-05. विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ यू हैड गॉन ऑन ए लेजर ट्रिप. अगर वो घूमने के लिए गया हो, अगर वो घूमने के लिए गया हो तो फिर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी. सॉल्यूशन ए. द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2004-05 इज 2003-04. 2003-04 को बोला जाएगा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड ही वॉज इन इंडिया फॉर 137 days. As he is not in India for 182 days, he does not satisfy the first condition of category A. The second condition of category A is also not satisfied because he is a citizen of India and leaves India during the previous year for employment outside India and is therefore covered under exception number 1, where 60 days will be substituted by 182 days. ठीक है. Therefore, he is a non-resident. Conditions of category B need not be examined. अब नंबर B में आ जाते हैं. In this case, although he does not satisfy the first condition of category A, he satisfies the second condition, as he was in India for more than 60 days in the relevant previous year and was also here for more than 365 days during 4 preceding previous years. He is therefore resident in India. The exception will not be applicable to him because he did not leave India for the purpose of employment. He satisfies both the conditions of category B because he has always been in India before 15/8/2003. The status of the SSC for the previous year 2003-04 will in this case be a resident and ordinary resident in India. ठीक है, समझ में आ गया. इलस्ट्रेशन 2.3 देखते हैं. मिस्टर बॉर्डर, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, has been coming to India for 100 days every year since 1991-92. 91-92 से ही वो भारत में 100 दिन के लिए आता ही आता है. कौन? मिस्टर बॉर्डर. कौन है ये? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर. डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2004-05. विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही हैज़ बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 110 days इंस्टेड ऑफ 100 days एवरी ईयर. अगर वो 110 डेज के लिए आता तो क्या तुम्हारा आंसर में कोई चेंजेस आएगा? देखते आएगा कि नहीं आएगा. पहले नंबर ये देखते हैं. मिस्टर बॉर्डर सेटिस्फाइज द सेकंड कंडीशन ऑफ कैटेगरी ए बिकॉज ही इज इन इंडिया फॉर more than 60 days during the relevant previous year and for 400 days during 4 years preceding the relevant previous year. Therefore, he is a resident. वो resident है, ये तो हो गया क्योंकि वो कंडीशन नंबर बी सेटिस्फाई कर गया.
Further, in this case, although he satisfied the first condition of category B of being a resident for at least 2 out of 10 preceding previous years, but he does not satisfy the second condition of category B, as during 7 years preceding the previous year he is in India for only 700 days. He shall therefore be a resident but not ordinarily resident in India. वो सेकंड कंडीशन जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की वो फुलफिल वो नहीं कर सकता है. यस, नंबर बी, ही विल इन दिस केस बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. ही सेटिस्फाइज both conditions of category B, as he was in India for 770 days in the last 7 years and he was resident for at least 2 previous years out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. ठीक है. Illustration 2.4 देखते हैं. X came to India from America for the first time on 10/10/2003. First time आया. He returns to his home country after staying in India up to 5/7/2004. He returns to his home country. अमेरिका चला जाता है after staying in India up to 5/7/2004. Will he be a resident in India for the assessment year 2004? Resident होगा. In this case, although X has been in India for a continuous period of 270 days, but it falls in 2 previous years. 2 previous years में है. That is, previous year 2003-04 and previous year 2004-05. During the previous year 2003-04, his stay in India was only 174 days. Therefore, he will be a non-resident in India in previous year 2003-04. As he does not satisfy the first condition of 182 days stay in India during the previous year. Further, the second condition is also not satisfied, as although he was in India for more than 60 days in the relevant previous year, he was not here for 365 days or more in 4 preceding previous years. He would also be non-resident in previous year 2004-05 for the same reasons if he does not come to India thereafter, as the period of stay in India will be 96 days on. Illustration 2.5. X came to India from America for the first time on 2 October 2002. He returned to his home country after staying in India up to 28 September 2003. Will he be a resident in India for the assessment year 2003-04 and 2004-05? अब इसका निकाल के देखते हैं. Assessment year 2003-04. During the previous year 2002-03, he is in India from 2/10/2002 to 31/3/2003. That is for 181 days. Prior to the previous year, he has never been in India. He does not satisfy any of the conditions of category A and is therefore a non-resident. Assessment year 2004-05. During the previous year 2003-04, he is in India from 1/4/2003 to 28 September 2003. That is for 181 days. He does not satisfy the first condition. During 4 previous years immediately preceding the previous year 2003-04, he is in India for only 181 days. He does not satisfy the second condition also. He is therefore a non-resident. It may be observed that his total stay in India from 2 October 2002 to 28 September 2003 is 362 days. At a stretch, still he is a non-resident. We have to determine the stay in India for each previous year separately, and therefore he can enjoy the benefit of being a non-resident even though his stay may be much more than 182 days, provided it falls in 2 different previous years.
हम लोग इस केस में देखेंगे कि इसका टोटल स्टे एट ए स्ट्रेच ये अगर हम लोग देखें तो देखेंगे कि ये 182 डेज से ज़्यादा है, लेकिन 182 डेज से ज़्यादा होने के बावजूद वो नॉन रेसिडेंट है। कैसे? क्योंकि जो पीरियड है वो 2 प्रीवियस ईयर्स में बट जाता है और इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर्स में वो सिर्फ 181 डेज के लिए ही भरे। तो इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल भारत में लंबे समय के लिए रहना चाहता है और वो नॉन रेसिडेंट भी रहना चाहता है तो उसको इस टाइप की टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2.6 Are an Indian citizen left India for the first time on 21 September 2003 for employment in Germany. During the previous year 2004-05, he comes to India on 5/5/2004 for 150 days. Determine the residential status of R for assessment year 2004-05 and 2005. During the previous year 2003-04, R was in India for 174 days. ठीक है, 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 20, and therefore does not satisfy the first condition. As regards the second condition, although he was here in the 4 preceding previous year for more than 365 days, as he was permanently in India, but for the relevant previous year 2003-04, he should have been here for 182 days instead of 60 days, as he is a citizen of India and leaves India in 2003-04 for employment abroad. ठीक है ना? He neither satisfies the first nor the second condition and is therefore non-resident in India. Similarly, during the previous year 2004-05, he visits India for 150 days. In this case also, the period of 60 days will be substituted by 182 days as he is a citizen of India. Therefore, he will be a non-resident in India even for previous year 2004-05. ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।